Uh, Good evening. I hope my voice is audible to everyone. Just a quick confirm of over the chat box. Am I audible to everyone? Okay, thank you. So again, a good evening, everyone. So my name is Soham Sharma. I'm a research analyst here at StockEdge. So today's session, I'll be explaining some of the features of StockEdge here, like the news and updates section, the FII/DIA activity data, how you can track the smart money in the stock market, the IPO section, as well as the how you can create your portfolio and watch list in Stockage. So these are some of the features which we are going to cover in today's session. So I'll be starting with the news and update features now. And a quick request to everyone that if you have any kind of question related to a feature that I'm explaining, so just hold for a few seconds. Let me explain 2 or 3 features, and then I'll be taking a few questions from the chat box. I hope that's okay to everyone. Okay. So first, let me go to the news and update section. So in the left-hand corner, you can see under trending stocks, you'll get news and update section. So if you just click over here, there are two sub tabs under updates. There's news and announcements. So news are basically any kind of news which is coming in the stock market. It is related to any particular stock or overall market or any kind of economical data which is important to the stock market. Throughout the day, it will be getting updated, right? So it is not an end of the day feature. It's updated on the live market. Okay. Next, if I come down to announcements feature, so announcements are basically corporate actions or corporate announcement which are needed to be published by the stock market for any particular stock to the exchanges or any SEBI regulation. Okay, so these are few announcements, but the important thing is you will get for the corporate announcement in the upcoming section. So here you will get all these sub tabs. Under the upcoming section, you'll get corporate action, and there are sub tabs like the bonus, dividend, rights, or any kind of split or consolidation happening in a particular stock. So as of now, I have selected all. So by default, it will be selected as all, and any dividend bonus, like as you can see, Franklin Industry is going to give a bonus of 1:1 as of today, right? Capri Global is going to give a final dividend of 15% or 0.15 paise per share. So these are coming as by default, all the corporate action activity in any stock in the market, right? But suppose if you want only bonus shares, right? So click on bonus. As you can see, only these the stocks which are giving bonus, it will show under this section, and it will be giving us date wise, right? Uh, okay. Next, if I click on dividend or any rights issue, it will show only that kind of corporate activity in stocks. Okay. Next, if I come down to events, so any kind of major events, if you like to see that any Fed meet is there or any RBI policy meet is coming in the upcoming few days, it will come under the event section. Okay. So any major event that can trigger volatility or any movement in the stock market, definitely those kind of major events will show under the upcoming events. Okay. Next, coming down to results. So we have already passed our quarter 1 results for this year, right? And these are the upcoming. Some of the smaller companies are still yet to publish their results, so they're in upcoming results. And if you click on the released results, so top line, bottom line figures will come in, like sales, EBITDA, and net profit are the 3 important parameters to judge a company's result, right? So as you can see, based on quarter 1 results, it has shown this much percentage of sales has been down, EBITDA is up, and net profit based on YOY and quarter on quarter. Both you can see the updates. Okay. And if you want to filter any particular list of basket of stocks, you can easily do that. Click on filter, and you can see major stock, NSE stock, or only NSE FNO stock. You can select as per your convenience, right? So this goes for the results section.
Now I will move on to FII DIA activity. So this is the FII DIA section. Click on it and you will see day-wise FII DIA activity, if they are net buyer or net seller in the market. So as you can see, as of last Friday, because this data gets updated every end of the day by 7 or 8 p.m. right? So it is currently showing the last Friday's data. So we have seen a big fall in the stock market, and if you can see, only in cash market segment there's only net sellers by the FII. So FIIs are foreign institutional investors, and we consider them as the market movers. So tracking their data is very important to the market, right? So in cash market, there has been a net sellers like 620 crores. But if you see the index futures data, so you can even click on plus button and you can see that Nifty 50, the index, they have shorted a lot. Like they have been net short in around 2,200 crores approximately for only Nifty 50. Nifty Bank, Nifty Financial Services, mid caps, every individual indices you can easily track. And I would specially request to check the only the index futures data, because that's where you get the overall direction of the market coming in, right? And other two tabs are CM provisional and CM SEBI. These are cash market data. So provisional data comes the day itself by the stock exchanges, the BSE and the NSE. But CM SEBI, the data which is validated by SEBI, it comes a day later. So you will get the CM SEBI data a day after that particular date. So suppose today is Monday, so today's data will get updated by Tuesday itself. But provisional data, you will get it by end of the day, 7 or 8 p.m. Right? So, but there's no much of a difference, but still provisional data, you can easily track the markets, right? Coming on to the FPI sectoral activity, this is a very interesting feature here. So I would like to elaborate a little here. So these gives a lot of sector analysis. So every fortnight, like 15 days, it gets updated, right? So as of now, 31st August 2024, last it has it has gotten updated. So as you can see, sectors like consumer durables has seen a quite a jump in net buying position by the FPI or the foreign portfolio investors, right? So, so consumer durables is going to be a good sector in the coming days to come. Next, if I go to healthcare services, it has been continuously in net buying position by the FPIs. So healthcare is overall a good sector. If you like to pick up good sectors in a short period of time, maybe 15 days, 30 days or so, then definitely FPI sectoral activity is a good way to analyze that, right? So just check for these data in every 15 days and it will be updated with the latest data. As you can see, fast moving consumer goods for the last consecutive to 15 days, it has been showing good buying strength by the FPIs, right? So this is a very nifty feature which can give you a good insights about the short-term momentum in the sectors, overall sector. Coming on to the derivatives data, which is in this section. So as I was telling you, in the derivatives data, you can easily click on the particular Nifty 50. If you just click over here, as you can see, I was showing that same data that was as of 6 September, 2,200 crores has been sold overall in index futures. So that's give you a direction that overall the market is overall weak, right? And based on every indices, you can individually select them, right? But only check the index futures data, because options data, you'll see calls and put and addition and deletion can't be much of a judgment there. But try to focus only on the index futures data. Another thing I want to show you in the news and update section, if you go to this futures OI data and click on participants. So this will give you a overall long and short position in the markets by the FII, foreign institutional investor. And this is a very important thing. Rather than clients, DI or pro, just focus on the index tab and well as the FII data. So if you can see, 6 September, there was a huge short covering, right? There was there was heavy long. So longs has been covered. So as you can see, earlier it was 3,93,000 contracts open in the long, whereas as of short has been heavily increased recently, right? So overall,
the FII are still net long in the index futures, but only for the 6th September, they are seen as being huge selling in the market, right? So as of now, with the futures OI data, if you want to analyze, the markets are still on the bullish side, right? As you can see, today has almost taken a support, Nifty or any other indices, right? So overall, if you want to analyze a particular data set, if they are completely net long or net short in index futures, this is the best way you can analyze using stockage. Okay. Next, coming on to the IPO. IPO section is basically any kind of ongoing, upcoming, or newly listed IPO. It'll give you all the three tabs over here. Okay. So ongoing IPO, there's, you can see the most popular one being the Bajaj Housing right now. So we also publish popular IPO reports like the Edge IPO note. If you just click over here and click on IPO note, it will give you a very good idea whether you should subscribe this IPO or not by reading the entire report. So our analyst prepared a detailed report on that IPO. So what is the price band, everything other than the normal details, you will get an entire report about the company. What is the company all about? What are the sections of this IPO? How this IPO money will be used by the company. Every minute details of the company and its financials is given in the IPO note. And based on this IPO note, by reading it, you can definitely make your decision about subscribe the IPO or not. So this goes for the IPO section. Other than that, you can also check the upcoming IPOs also, the list of upcoming IPOs in the market. So as of right now, mostly are SME IPOs, as you can see in the downward section is list, small and medium enterprise IPO. Some of the newly listed IPO, how they have like the Style Bazaar IPO, right? So not much gained. So the issue price was 389 and currently the price is at 389 itself, so almost down by 3.4%, right? So overall you can get an idea how the recently listed IPOs are performing right now. Other than that, in the IPO section, the most important being the Edge report or the Edge IPO note. Like the Cross Limited, we have an Edge IPO note. If you just click on IPO note, and it will show you the rating, our analyst rating, whether you should subscribe or not. Okay. So what is Vinod Kumar has a question. What is volume? Uh, so volume is basically the buying and selling data in the market. I don't think this is the right platform to ask. So sale is low, how profit is increased. There are multiple factors, Mrityunjay Datta, that if sales is low, profitability has increases, maybe due to the lower expenses of the raw materials, and many other factors are there. Rahul Roy, can we set news and events alert company wise? Rahul Roy, very good question. I'll be going through that question when I will be explaining the portfolio as well as the watch list section. Okay, so I'll be going to the portfolio and watch list section right now. Okay, so moving on to the my portfolio. Okay, so how you can create your portfolio in Stockage. So you need to first go to the my Stockage section. As you can see in the left hand corner, click on my Stockage and you will see my portfolio under it. Click on my portfolio. And this is my current portfolio right now. I think there's some questions coming in. Hello, Swam. Will you talk about swing trading strategies today? Example, Eagle Momentum. No, sir, not today because that is a separate section will be covered by some other day. Okay. Please clarify a sector rotation section. Vipul Patel, sector rotation sector will be done on Thursday itself. Okay. So right now we'll be talking about only these features which I have earlier mentioned. So I have already done IPO section, news and update, and FII/DII data. Now I'll be completing the IPO, the my portfolio and my watch list section. Okay. So Rahul Roy has a beautiful question. Can we set news and alert events for any company wise? That I'll be showing right away, sir. Okay.
So this is my overall summary of the portfolio, as I've already created my own portfolio. You can change the two tabs, like the 1 day change and the overall change. So if I click on overall change, the overall percentage gain, it will show me. Okay. Sorry. Now, if you go to the portfolio, you can add your own portfolio. So as of now, I've added multiple portfolio, like my mutual fund portfolio is there, my short-term trading portfolio, investing portfolio, all I have created separately, right? Now, suppose if you want to add your portfolio, okay, click on add, give it a portfolio name, like let's say trading swing, okay? Only swing trading strategies I will add. Now, it will give you the option. So this is now auto sync is in beta phase. So I'm not talking about it. Next, you can connect to your broker. Click on broker. So right now, Zerodha, Angel One and Upstock platform we are supported. So if someone is using Zerodha, Angel One and Upstock, they can easily log into their broking account, and Stockage will automatically fetch the portfolio in your brokerage account to Stockage, and you need not to do any other thing. Okay. Other than that, let me show you how else you can add your stocks in your portfolio. First of all, the CSV upload data. So there is a particular Excel format. So you'll find this Excel format over here. Click here to get the Excel format. Yes, I want to download. This is the portfolio template. Open it. So one Excel file will open with a template given. So you need to put up your stock ISIN number or BSE script code. So as you can see, stock Federal Bank, the script code you have given, the quantity of stock which you are holding right now at an average price of this. Similarly, for BSE stock, you need to give your the BSE script code, okay, the quantity as well as the average price. For mutual fund, you need to give your ISIN code for the mutual fund, exact one, and the number of units which you are holding at an average price. Once you do this, you need to upload the same CSV template in your portfolio section and browse file to uh, use the portfolio template, and it will be added. The most convenient way which I found is the manual entry, because there are multiple reasons to that. So let me show you. Click on the normal manual entry. So suppose I have added SBI to my portfolio today. So SBIN, so State Bank of India. So at a particular date, you can change the rate as well. Suppose I bought it at 780 with a quantity of 70. Okay. Add another stock to your portfolio and click on save. Okay, one stock has been added. Next, I want to add Tata Motors, suppose. So Tata Motors Limited is found. The current rate, the current market price it will take, and I am taking 25 shares of Tata Motors, right? Again, save. You can see two stock has been added to my portfolio, right? So if you just go here, so right now trading swing, we have created this portfolio. The total value of the portfolio, today's change, it will show you it has changed by 0.02% because we have added this today itself. And if you just click over here, you will get a lot of details over here, right? So what are those details? So edge insight. So somebody was asking about any particular news that has particularly in my set of stocks. So easily you can go to this news section. So as you can see, I've gone to this news section. So only the list of stocks which you have in your portfolio will give you the news updates, right? Again, Edge Insights is a very beautiful feature. So any kind of activity in the stock, be it a technical activity or any kind of corporate action or any fundamentals change or high volume and delivery data, anything, insights about the particular stock which you're holding in your portfolio, it will show you under the Edge Insights, right? Now, if I go to sector allocation based on what are the sectors I'm having. So two stocks only I've added. One is from banking and another is from automobile. So as you can see, it will give you a overall sector allocation. So in banking, I have higher weightage because I have bought many number of stocks of SBI compared to Tata Motors. So that's why this division is given, right? Industry wise classification is also, you can get it, is the same.
Market cap allocation. So I'm completely in large cap right now. That's why it's showing the 100% portfolio allocation is in my large cap stocks, right? Other than that, any kind of delivery data, volume and delivery data, only for those particular list of stocks, right? It will show you, right? Any technical indicators, levels, or any particular chart pattern forming in the stock that you're holding in your portfolio. Every inch of details, you can get it from my portfolio section, right? Again, the news and announcement is already there. Any corporate activity for a particular list of stocks in your portfolio, you can also get that. Any deals like block deals, bulk deals coming in for your portfolio stock, you can check it, right? Rather than going to the initial market and checking the deals data, block deal, insider deal, etc. You can directly go to my stockage and click on my portfolio. Let me go to my investing portfolio, right? I can show you a lot better. Uh, Sector allocation in my investment portfolio, as you can see, we have banking, finance, logistic, information technology, right? This is the overall sector allocation given in. Similarly, market cap allocation I've already shown you. Large cap, small cap mixed in my portfolio, right? And any other particular data, you can see it from your investing on your portfolio, right? Other thing, if I want to show you in my portfolio is that, let me go back. You can change the number of portfolio. If I want to delete, then click on manage. Okay. And here you will see delete button. So suppose right now I've created the trading swing. I want to delete it, and you can easily delete it. Right. Another thing, if you want to add stocks or delete stocks in your existing portfolio, you can also do that. Just click on your investing portfolio. Let me show with this. And I want to manage this data. So suppose as of right now, I have HDFC Bank 50 shares, right? So HDFC Bank of 50 shares, here it is. Okay. So overall, I gave only 3%. So stock is not moving much. So I want to exit or offload a few stocks in my HDFC Bank. So click on this edit button over here. Okay. Existing, I have 50 quantity. I want to less. So how much I want to less? Suppose I want to less 50%, which is 25 quantity I want to less at a price of current market price. Click on save. As you can see, HDFC Bank, currently I have now 25 shares right now with an investment amount of 40,000, right? You can easily add as well. Right now I've shown deletion. You can also add it. So again, I want to add, suppose I want to add Zomato and any 100 shares. Click on it. I want to add quantity as 100. Okay. At a particular average price, you can change, but I'll let it keep at CMP and save. So as you can see, Zomato now hold 200 shares I'm holding, right? At an average price of 159.60, right? So this is how you can add or delete stocks in your portfolio, right? Coming to my watch list section over here. Same thing, not much difference in my portfolio, but from my watch list, the only difference which I would tell you guys over here, that in any platform you want to add a watch list, right? That it can be easily added to your broker account itself. But what beautiful feature we have added in the stockage here. So suppose I want to create a watch list first. Okay, let's give it a name, swing trading. Okay, add. So swing trading I have added. I want to add stocks. So individually you have to add stocks. So let's go for Tata Motors. Tata Motors. Just click on the star and it will be added. Stocks added to swing trading. HDFC Bank. Click on star and it has been added. Uh, Hindustan Aeronautics. This Hindustan Aeronautics. Click on the star symbol and it will be added. So as you can see, 3 stock I've added. And here you can see in this, they're added at this price on
9 September 2024, like today's data, right? Now, while adding while adding stocks to our watch list, what we see over the coming days, how the stock has been is performing. And if it is performing well and good, then we enter into a position, right? So this feature will give you a benefit of that. Like since the day I've added this stock in my portfolio, how this share price has given this return, right? And easily you can make your decision that whether you should proceed with entering into that stock or not. If it is not performing since the day you have added to your watch list, then definitely there is no momentum in the stock right now and you can avoid easily, right? So this is one beautiful section we have added, that at which date you have added this stock in your watch list. Other than that, except the sector allocation and the market cap allocation, you will get all the data, like what are the gainers and losers, the delivery data, the technical data, any chart pattern formed in your particular list of stocks which you have added to your watch list. All other data remaining the same, you will get the watch list. But again, you have to add one by one, and there is no Excel that you can upload while doing the watch list feature. Okay. So let me check the questions once. Okay. Okay, Rahul Roy, thanks, but Stockage mobile notification. I mean, Stockage can send mobile notification from company events, right? Company events, as of right now, you can check the target levels. So if you set any particular target, it will show you the notification. So you can set your targets from here. So go to any particular stocks and my targets. So if you just add your target and once it reaches that level, it's achieved, it will show you a notification. Okay. Uh, Other than the price which has entered as manual as purchase price. Ganesh Babu, that's correct. I have entered as purchase price. Again, while at the time of deleting, you can only check the CMP, the current market price. But at the time of entering fresh purchase, you can edit the average price. Okay. What is the difference between block and bulk deal? So right now, so this is not the feature that I'm explaining right now. So any other day, this feature will be explained in detail. Okay. Can we also see data from open position of FNO in my portfolio section? FNO position. No, sir, only stocks you can add it in your portfolio section, not FNO. Can I import watch list from brokerage firms? No, sir, you cannot import watch list. As I've already mentioned, you need to add it manually to the watch list. Where we find option chain, you can find option chain, like suppose Axis Bank, click over here. This is option chain data. Okay. This is the option chain. Okay. Ashish Bhatt, I hope you got your answer. Okay, so any other question which I have explained? Rahul Roy, can I check the FII delivery data for individual company stocks, DUIs delivery? No, you cannot do that, sir, because FII data coming from the exchanges, overall cash market data, you can segregate. Okay. When new version update its stockage app, yeah, I'm showing you the newer version of the UI of our Stockage web app, and in the mobile, it will be updated soon, I guess. What is option chain? Option chain is basically it's a futures and OI data where calls and puts data has been shared. So this is a very vast thing to say, but in ELL markets, we have a definite module on options, futures and option. You can check that, sir. Through option chain, are we able to fix target of a stock? No, sir. You cannot do that. Udhav, sir. Udhav, sir. So any other question that I have explained the feature in Stockage? Any other question you can ask me right now? Or next, I think Swatiti will be explaining the Stockage social section. Uh, Hello, Swatiti, are you there? Yes, Soham, I'm there. So I have completed all the questions and my features as well. Okay.
You can take over. All right. Everyone, thank you for the joining. Okay. Okay, so before we start the session, I would like to know a little bit about each one of you. So there's a poll which I am about to raise. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस पोल को रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं आप सबको और बेहतर तरीके से जान सकूं, प्लीज. You all must can see there is a poll on your screen. आप सबसे रिक्वेस्ट है if you all can please kindly participate in the poll. All right, so with this, we end the poll. Let me just share the screen with everyone in terms of the poll. So there are around 43% people who have taken Stockage Social Club, and 17% have taken Pro, 35% have taken Premium, and there are around 4 people who are not sure about उनकी कौन सी plan है. तो आप चिंता ना करें, मैं आपको definitely help करूंगी. In terms of the market experience, I could see that 61% of people have more than 2 years of experience. Okay, so let me just raise another poll for all of you because ये polls काफी important है. Okay, so as because you all know that ये जो Stockage Smart session है, we conduct from Monday to Saturday. So ideally इसका जो roster होता है वो Monday से शुरू होता है. So आप सबसे जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग हैं जिनका ये first time session है या फिर आज का जो session है वो आप पहली बार attend कर रहे हैं. So I would request you all to please kindly participate. Okay, so with this, I end the poll. So as we see that 51% of our here who are attending this session for the very first time, and there are around 12% of people who have attended this session already 6 times. That's great. Okay, so let me just stop sharing this. Okay, all right. So अब मैं जानना चाहूंगी that आप सबसे अनिल जी एंड एवरीवन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल आप सबसे जानना चाहूंगी दैट आप में से जितनी लोग हैं यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं हाउ मेनी ऑफ यू हियर नो हाउ यूज स्टॉकेज सोशल इफेक्टिवली. अगर आपको इफेक्टिवली यूज करना आता है तो दैट्स वेल एंड गुड बिकॉज मैं अभी आपको सबको स्टॉकेज सोशली सिखाने वाली हूँ. इफ यू आर नॉट pretty confident in using stockage social, in that case आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं for the rest of the 20-25 minutes because I will be explaining related to the Stockage Social. So, Priyashi, thank you for the confirmation. Mrityunjay ji, thank you. Okay, okay. Okay, Rajesh ji, thank you. चलिए, great, all right. So, मैं थोड़ी बेसिक बातें पहले करूंगी. Okay, so and I will be using 2 languages today. वन इज इंग्लिश अनदर इज हिंदी. तो ये 2 लैंग्वेजेस में बात करूंगी. अगर आप सबको कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा.
Next, I will try to go little. I'll try to move little slow. मैं थोड़ा धीरे धीरे आप सबको समझाने की कोशिश करूंगी. I'll try to explain in both the languages, English and Hindi, and I will move forward little slow so that आप सब कोई समझ पाए जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. Right? Okay. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. There have been people who were not sure about कि उनका प्लान कौन सा है. तो बहुत ही सरल, वेरी इजी. इफ यू गो टू stockage.com, अगर आप ये अपना आइकन पे क्लिक करेंगे जो आपके फर्स्ट नेम का इनिशियल है, मेरा नाम स्वाति है, तो इसीलिए इट इज शोइंग एज एस. व्हेन आई क्लिक ऑन टू दिस, यू विल सी द डैशबोर्ड. जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे आती हूँ, आई विल बी एबल टू सी कि मेरा क्या सब्सक्रिप्शन है, कब मेरी प्लान एक्सपायर हो रही है, एंड हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग. So all of this is easily visible for me. So this is for them who are not sure about which plan have you purchased, right? Now, the second thing is that आप सबके फोन पे दो एप्लीकेशन definitely downloaded होने चाहिए. One is Stockage app, another is Stockage Social. So can I know if you have both the application already downloaded in your phone? So just write both, otherwise आप कुछ लिख सकते हैं not both. So ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे आप सब मुझे. फैंटास्टिक, ग्रेट, ग्रेट. Okay, all right. So I get a mix of combination of people who have not downloaded both, and there are people who have downloaded both. That's great. चलिए कोई बात नहीं है. तो ये मैंने आपको एक नई चीज ये सिखाई है that you all should definitely have two application on your phone. One is Stockage app, another is Stockage Social. ठीक है. स्टॉकेज सोशल ऐप हो या स्टॉकेज ऐप हो, ये दोनों ही ऐप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में अवेलेबल है. सो यू नीड नॉट टू वरी. ऑलराइट, चलिए मूविंग अहेड. सो राइट नाउ आई एम ऑन द वेब वर्जन ऑफ स्टॉकेज. वो कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर आपको 9 डॉट्स दिखेंगे ऑन माई स्क्रीन, टॉप राइट प्लीज सी. इफ यू क्लिक ऑन दिस 9 डॉट, you will see there are 3 drop down menu. One is Stockage web app, another is Stockage social, another is Stockage website. So right now I am there on the Stockage website, but now I wanted to go to the web app. यानी कि जो Stockage का एप्लीकेशन है, मैं उस एप्लीकेशन के वेब वर्जन को खोलना चाहूंगी. अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से विवेक जी का. ओके, विवेक कुमार जी, जैसे कि अगर आप मुझे पूछेंगे कि स्वाति आपका फेवरेट क्या है इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग द स्टॉकेज एप्लीकेशन, तो मैं आपको कहूंगी मेरा फेवरेट स्टॉकेज वेब ऐप है. बिकॉज मुझे वेब ऐप पे काम करना काफी अच्छा लगता है. बड़ा स्क्रीन है तो मेरे लिए काफी अमेजिंग होता है, राइट? यू नो, समझने के लिए, यू नो, व्हेन आई वांटेड टू फेच सम डेटा, राइट? सो दिस इज समथिंग, द वेब ऐप इज हियर. यहाँ पर इफ यू क्लिक ऑन द न्यू टैब, यू विल सी दैट आपको प्रीवियस लुक्स भी आ जाएंगे जो पहले स्टॉकेज वेब ऐप का लुक था. But I would request you all that you all should get comfortable with the new look only. So इस तरीके से आप वेब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, नाउ राइट नाउ अभी तक जो आपको स्टॉकेज सोशल और स्टॉकेज के बारे में आपको सोहम ने बताया है, वो आपको इसी तरीके से उसने वेब वर्जन को ओपन करा था, या फिर आप सिंपली web.stockage.com भी अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से इट विल कम ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो प्लीज राइट Y एज ए yes और N फॉर नो. Anil ji, of course, the application is available on the web and mobile also, right? अब कैसे आपको switch करना है? To switch the application, 9 dots पे click करना है. Whichever platform you wanted to switch, you can switch by clicking on the 9 dots. तो अगर मुझे स्टॉकेज सोशल में जाना है, so if I click on the 9 dots, right, I can go to Stockage social. Now switching to the application, if this is clear, again, Kapil ji, Sashi ji, and all of you, please kindly confirm Y as a yes or N for no. I'm sorry, मैं थोड़ा सा आप लोगों से मेहनत करा रही हूँ. सुलोमन जी, आप कह रहे हैं कि आपको क्लियर नहीं है, तो प्लीज मुझे बताइए what is not clear so that I can explain you again. And I would request humbly to everyone to please be patient with me, because I ask lot of I take lot of confirmation from each one of you, because मेरे लिए आप सब important है. मुझे ये जानना रहता है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं. Okay, great. I have got into the confirmation close to 100%.
Okay, so there is Madhuji. Let me just explain you how to switch to the different tab. अगर आप स्टॉकेज के वेबसाइट पे हैं या किसी भी स्टॉकेज के लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो ये जो 9 डॉट्स आपको दिखेगी, 9 डॉट्स पे व्हेन यू क्लिक मधु जी, यू विल बी एबल टू स्विच टू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, राइट? सो इफ यू क्लिक ऑन द प्लेटफॉर्म व्हिच आई मेंशनड हियर, you will be landed to the platform whichever you wanted to switch to. ठीक है? Now coming to Stockage Social, सबका ध्यान मेरे स्क्रीन की तरफ में होना चाहिए please, because it is very important. Okay, so as now we have seen that we have a combination of people here who have taken premium, few have taken pro, few have taken club. Okay, that doesn't mean कि like कि you all have to upgrade to the maximum the best subscription plan, that is club. It is not compulsion. आपने अपने हिसाब से लिया है सब्सक्रिप्शन, दैट इज गुड, पर जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी ऑफरिंग्स भी डिसाइडेड होती है, राइट? सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट स्टॉकेज सोशल. व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड to the premium user, what is offered to the pro user, and what is offered to the club user. ठीक है? So now the first thing, on the left side, do you see clubs here? On the left side आपको सारे clubs यहाँ पे दिखेंगे. Investing ideas, trading ideas, fundamental, technical club वगैरह वगैरह different clubs आपको दिखेंगे. First thing आपको जानना है कि that if you are a club member, you have the access to all the club groups if you are a club user. ठीक है? लेकिन अगर आप प्रीमियम यूजर हैं या फिर आप प्रो यूजर हैं, तो आपके लिए केवल एक ही ग्रुप ओपन है which is named as P2P learning group. I would like to repeat again. If you are a premium user or a club user, if you are a premium user or you are a pro user, you have only one platform or one group available into this is P2P learning group. This particular group is only open for premium and pro user. And of course, club user अगर आप हैं तो आपके पास सारे क्लब्स के ग्रुप के एक्सेस है, इवन P2P लर्निंग ग्रुप. अब मान लीजिए लेट्स से मधु जी कहती है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ प्रीमियम यूजर और प्रो यूजर. शी टेल्स मी दैट स्वाति, हियर P2P learning group is given here. What access do I get here? So in P2P learning group, Madhu ji, it is very simple that you are ready here to connect with more than 36,000 members जो यहाँ पर एक्टिव हैं. ओके, P2P मतलब पीयर लर्निंग. पीयर के साथ आप ग्रुप कीजिए, सीखिए, उनसे सीखिए, या फिर आप भी लोगों को कुछ सिखा सकते हैं. If you wanted to share your thoughts or ideas here, right? So यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम फ्लोट करते हैं which is important. जैसे कि संतोष कुमार जी हैं, ठीक है, ये अपने आइडियाज को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. अगर उनके कोई आइडियाज यहाँ पे शेयर किए गए हैं, अगर आपको उनसे कुछ पूछना है, you can click on the comment section and ask whatever query you have. Okay, so this are related to P2P learning group. यानी कि अगर आप प्रीमियम या प्रो यूजर हैं, हम बहुत कुछ इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पोस्ट करते हैं हमारे भी हैंडल से, विच इज स्टॉकेज के हैंडल से. आपको ब्लू टिक दिखेगा, तो हम कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करते हैं विच कैन हेल्प यू टू गेन इंफॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स टू. जैसे शिवानी गोयल जी हैं, उन्होंने भी कुछ श्री राम के बारे में पूछा था, डाला था इंफॉर्मेशन, और वो स्टॉक अभी 24% अप है. लेकिन हम आपको ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप P2P को फॉलो करके कंप्लीटली वो सारे स्टॉक्स को परचेज कीजिए या सेल कीजिए. वी विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग सच. P2P is only to connect with your peer and ask question, if any, if you wanted to ask from peer. Okay, so I hope this is clear. If this is clear, please write Y as a yes or N for no. There is no restriction in terms of joining the P2P learning group. P2P learning group is open for premium, pro and club user. पर हाँ, अगर आप नॉन पेड यूजर हैं तो आप इस पे लॉग इन भी नहीं कर पाएंगे, स्टॉकेज सोशल पे लॉग इन नहीं कर पाएंगे. ग्रेट. अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हुए. इफ एनी वन ऑफ यू हियर आर क्लब,
तो लेट मी सी हु आर अ क्लब मेंबर। तो अगर आप क्लब मेंबर है तो प्लीज मुझे क्लब लिख के एक बार चैट पे डाल दीजिए, सो दैट मैं आपके नाम एज एन एग्जाम्पल ले सकूं। ओके, सो राजेश जी इज द फर्स्ट। सो मैं राजेश जी का नाम लूंगी एज अ क्लब। ओके, राइट। With everyone permission, Rajesh ji, with your permission, I am taking your name because you have posted your name first. ठीक है? So अगर consider कीजिए कि राजेश जी is a club user, जैसे कि उन्होंने mention किया है, तो first day वो यहाँ पे StockX social पे आते हैं and then he thinks that कि यहाँ पे करना क्या है मुझे। तो अगर आप क्लब यूजर है राजेश जी, राकेश जी एंड द अदर पीपल ऑल्सो, यहाँ पर आपको मल्टीपल क्लब ग्रुप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो ये सारे ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल हैं जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। तो अब हम एक क्लब ग्रुप्स को अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे एंड दिस इज अगेन फॉर ऑल द क्लब यूजर, अनिल जी, अदर पीपल, एवरीवन, ठीक है। आप सबके लिए ये है विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन योर रिलेटेड टू दी क्लब। ओके, 1 second। ओके, राइट। सो राजेश जी, आप समझे कि आप इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सो आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस चाहिए या स्टॉक आइडियाज चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है दैट इफ यू वांटेड अ स्टॉक रिकमेंडेशन और यू वांटेड काइंड ऑफ स्टॉक आइडियाज और ट्रेडिंग आइडियाज इन्वेस्टिंग रिलेटेड, तो आप इन पर्टिकुलर ग्रुप में जा सकते हैं। सो अगर मान लीजिए आपको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल रिलेटेड कोई ट्रेड चाहिए, तो आपको स्टॉक आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज के अंदर जाके मिलेगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज चाहिए, सो यू विल बी गेटिंग अंडर द इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ठीक है। बहुत ही सिंपल। नाउ इन्वेस्टिंग आइडियाज का मतलब हमें बहुत ही समझ आ रहा है, इजीली समझ आ रहा है कि इसमें वो सारे स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक आइडियाज दिए जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, ठीक है। ट्रेडिंग आइडियाज में कौन से स्टॉक आइडियाज या स्टॉक रिकमेंडेशन दिए जाते हैं विच इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग। नाउ related to trading, let's say विकास जी आस्क मी कि स्वाति डू यू गिव इंट्राडे ट्रेड आल्सो, ट्रेड कॉल्स आप लोग देते हैं। तो मेरा जवाब विकास जी के लिए रहेगा नो। हम ट्रेडिंग आइडियाज में आपको स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, डिलीवरी, देन यू कैन से एफएनओ रिलेटेड हम ट्रेड कॉल्स देते हैं अंडर द ट्रेडिंग आइडियाज। So if you consider today to be as one first session of mine which I'm taking with all of you, in that case, please mark my word that we do not give intraday trade calls under the trading ideas. Okay, so मैं day 1 पे आपके साथ एकदम ट्रांसपेरेंसी रख के बात करना चाहूंगी, right? So अनिल जी, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से अनिल जी का। सो अनिल जी ट्रेडिंग आइडियाज में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेडिंग आइडियाज दिया गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग आइडियाज दिया गया है। और ये ट्रेडिंग आइडियाज कौन देता है, अनिल जी का ये सवाल है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाना चाहूंगी। ऑन द टॉप लेफ्ट अनिल जी आपको डिस्कवर दिखेगा। ओके, द मोमेंट यू क्लिक ऑन डिस्कवर अनिल जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा प्लीज, और यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट एक्सपर्ट्स। ओके, मार्केट एक्सपर्ट्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके पास हमने ये ग्रीन टिक का विजिबिलिटी दिया है। और ये सारे जो ग्रीन टिक हैं, दे आर द वन हु आर गिविंग यू स्टॉक रिकमेंडेशन अंडर इन्वेस्टिंग आइडियाज या फिर ट्रेडिंग आइडियाज। ओके, एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस ऑथोरिटी टू गिव ट्रेड कॉल्स? बिकॉज दे हैव अ ग्रीन टिक। ग्रीन टिक का मतलब हो रहा है दे आर आइदर a SEBI registered or either they are RE qualified and they are the one who are eligible to give the market stock ideas, and they are called as market expert. अगर आपको समझ आ गया कि मार्केट एक्सपर्ट और ग्रीन टिक का मतलब क्या है, तो प्लीज मुझे लिखेंगे वाई एज ए यस एंड फॉर नो। सॉरी, मेरी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं डाली। मेरा और इसके साथ एक अटैच्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी समझ आ गया कि ये जो ग्रीन टिक है वो अपना एंगेजमेंट कहाँ डालते हैं, किस ग्रुप में डालते हैं, दे ओनली गिव अंडर द इन्वेस्टिंग आइडियाज एंड ट्रेडिंग आइडियाज ओनली, ठीक है, बिकॉज दे आर द वन who are eligible to give you stock recommendations. ठीक है, ग्रेट, ऑल राइट, थैंक यू, आप सबने कंफर्म किया मुझे। ओके, अब देखिए, जैसे कि मैं अनिल जी का और एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। अनिल जी, लेट्स से ही हैज कम हियर टुडे फॉर द फर्स्ट डे इन दी स्टॉक इट सोशल। नाउ व्हाट ही सीज दैट, अरे स्वाति,
When I go to the market expert, I see multiple green tick people. अब मैं तो पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किसको फॉलो करूँ, मुझे किसे फॉलो करना चाहिए, मुझे किसे फॉलो नहीं करना चाहिए. तो कैन यू गिव मी सम टिप्स टुवर्ड्स दैट? ऑफ कोर्स अनिल जी, आई विल हेल्प यू इन दैट टू. सो अनिल जी, सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, अगर आप कर सके, मेरी बात समझ सके, या अगर आप मेरी रिक्वेस्ट रख सके. पहला 7 से 10 दिन आपको सबसे पहले स्टॉक सोशल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है. स्पेशली आपको, अगर आप क्लब मेंबर हैं तो इन ग्रीन टिक को ऑब्जर्व कीजिए, उनके स्टाइल को देखिए कि किस तरीके से वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट. उनके किस तरीके का वो ट्रेड कॉल दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिए. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एक फेवरेट पर्सन को खोलती हूँ यहाँ पर, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ. लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ ज्योति बुधिया. ठीक है. तो मैं ज्योति बुधिया जी या फिर अदर पीपल को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगी. ठीक है. आई विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम कि किस तरीके का ट्रेड कॉल देते हैं. अनिल जी, थोड़ा सा और डिटेल्स में दिखाऊंगी कि किस तरीके का ट्रेड देते हैं. तो जैसे मान लीजिए ये फ्राइडे का था, 6 सितंबर. ओके. 9:17, सॉरी, इन्होंने मंगलवार को ये पोस्ट किया था HFCL लिमिटेड के ऊपर में. तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है. बाई करना है इस रेंज पे, एसएल लगाना है 145 पे, टारगेट अप्रोक्स 160, 170, 175, होल्डिंग पीरियड इज 2 वीक. ओके अनिल जी, इसका रिजल्ट क्या हुआ है? 160 क्रॉस हो गया, फर्स्ट टारगेट अचीव है. तो उन्होंने कहा है फ्राइडे को कि आप अपना 33% प्रॉफिट को बुक कीजिए और बाकी आप फर्दर होल्ड कीजिए. अब अनिल जी को लगता है नहीं, 160 something, I am satisfied. I wanted to move out of this trade. You can do, sir, but this is what she is recommending because she is a green tick, she is a SEBI registered, or either she is a RA qualified, and she is the one who is eligible to give you trade ideas under the trading ideas or investing ideas, considering what kind of profile she trades into. तो ज्योति जी आइडियली FNO में करती हैं, and she does swing trading and positional trading. ठीक है. So this is how you will see, observe that how there have how कि इनका स्टाइल क्या है, what kind of style they are participating into the market. So you can also read about her details if you read under the about section related to her. ठीक है. ये आपका पहला तरीका है just to understand कि किसे फॉलो करें किसे नहीं. जो दूसरा मैं बताने वाली हूँ, इट इज अमेजिंग. ओके विवेक जी, मैं अब आपका एग्जाम्पल लूंगी. ठीक है. विवेक कुमार जी, आपको सर्च बटन पे जाना है. यू गो टू द सर्च बटन एंड देन यू विल राइट कॉल समरी विदाउट गिविंग एनी स्पेस. ये कॉल समरी है, इसको क्लिक कीजिए. द मोमेंट यू क्लिक ऑन कॉल समरी, विवेक कुमार जी, आप देख सकते हैं कि हम सारे ग्रीन टिक का रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करते हैं. दैट मीन्स every 15 days and every 30 days we publish the report card of whatever trades they have given, उनका परफॉर्मेंस कैसा है. Because sir, you are not a user, you are not a client, you are not a customer to us, you are part of this stockage family. और ये हमारा जिम्मेदारी बनता है that we give you utmost clarity whatever trade calls has been given here. So जैसे कि ज्योति जी का था, तो मैंने यहाँ पे ज्योति जी का कॉल समरी खोला है. तो 30 पूरा अगस्त का एक रिपोर्ट आया है. ये महीने का जैसे ही 15 तारीख ओवर हो जाएगा, 16 तारीख को हम इनका 15 डेज का रिपोर्ट कार्ड फिर से पब्लिश करेंगे एंड सितंबर खत्म होने पर हम उनका वापस से 30 डेज का परफॉर्मेंस पब्लिश करेंगे. तो यानी कि अगर आपने किसी का स्टाइल देखा है, कुछ दिन ऑब्जर्व करा है आपने, और उनका कॉल समरी रिपोर्ट भी देखा है कि उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड whom to follow and whom not to. I hope this is clear. If clear, please write Y as a yes or N for no. Let me just see if there is any other question. Okay, great. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं with everyone's permission. Udhav ji, you're asking for the report. I'll show you once again. You go to the home screen of Stockage Social.
look for call summary. Sorry, typo. Call summary, click on this. You will be able to see the reports card of all the green tick and the blue tick if they have given any recommendations. In that case, you can get that. Okay. Or related to some momentum investing, yeah, that is something good you have mentioned. I'll definitely take Bhavik ji as a feedback. Gauri ji, if you're a premium user, no, you will not be getting stock idea, stock recommendation. As I towards the start of the session, I mentioned that if you're a premium and pro user, you will only have access to P2P learning group, not the other groups. Okay. Now let me take an example of Bhavik ji. Bhavik ji, let's say if you are a club user, okay. In that case, Bhavik ji, we will move ahead with the different club groups, which is a doubt solving. So Bhavik ji, very simple. If you see if it is a fundamental club, technical club, commodity currency club, FNO club, mutual fund, उसके ऊपर लिखा हुआ है डाउट सॉल्विंग. यानी कि अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आपको अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर ग्रुप पे जाके सवाल करने हैं and you will get the answer. Okay. So now let's say Bhavik ji, there is one particular stock. There is one particular stock which is about to give a breakout. Breakout level के पास में है. अब आपको लग रहा है कि ये breakout देगा, तो मैं कहाँ पूछूं, किससे पूछूं? You go to your friends, you go to P2P group, or you go to the Telegram channel or anything you wanted to. I will tell you, don't go anywhere. Just come to the technical club. भाविक जी, ask question that this is the stock, ये चार्ट है, मुझे इसका लगता है कि इसका ब्रेकआउट लेवल आने वाला है, आप क्या सजेस्ट करते हैं that this will be a good or not, और इसका सपोर्टिंग लेवल्स क्या होगा, सपोर्टेड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है रिलेटेड टू टेक्निकल सवाल आप यहाँ पे पूछेंगे. नाउ आई विल टेल यू द मैजिक भाविक जी. Agar Bhavik ji, if you're asking the question during the market hours, you will get the answer within 5 minutes if you're posting your question in the technical club. Because ये सवाल technical related है तो आपको अपना सवाल technical club में ही पूछना पड़ेगा and you will get the reply within 5 minutes. Okay. Now how to ask a question? Everyone please concentrate on my screen because ये मैं बहुत ही important चीज सिखाने वाली हूँ आप सबको. That how to post your question if you wanted to ask any. Okay. Okay. Now, if I go to the let's say technical club, आप किसी भी doubt solving group में, चाहे वो technical हो, चाहे वो fundamental हो, चाहे वो currency commodity हो, चाहे वो FNO हो, चाहे वो mutual fund हो, आप किसी भी club group में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका एक ही है. Okay. So let's say मेरा जो सवाल है वो मैंने यहाँ पे testing लिख दिया. And now I wanted to choose one particular stock which I wanted to ask a question. ठीक है. तो भाविक जी, can I take HDFC? Okay, good. भाविक जी said yes. तो let's say मैं डॉलर का साइन यूज करूंगी और डॉलर साइन यूज करने के बाद स्पेस नहीं दूंगी. I will write HDFC. The moment I write HDFC, I will get all the list of HDFC. I'll select HDFC Bank because मेरा जो सवाल है वो HDFC related होना है. ठीक है. So I can attach images, anything that I wanted to upload it here, I can do that. If I post this during the live market, I will get the reply within 5 minutes under the technical club. एक बार और दिखाती हूँ. अगर मैं डॉलर साइन यूज करती हूँ तो सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन आती है वो सेक्टर आती है. ठीक है. इस बार लेट्स से मुझे सेक्टर करना है. ओके. मुझे इस बार बैंकिंग सेक्टर चूज करना है. आई हैव डन दैट. Now let's say again I use a dollar sign. This time I wanted to talk about ICICI. Okay, bank. So I have just written ICICI and there are list of the stock is coming here. I'll select ICICI Bank. But what if Bhavik ji does give a dollar, give a space and write ICICI? Anything comes, nothing will come and you will not be tagging the stock properly. So this needs to be highlighted properly. It gets highlighted if you do not give a space after putting a dollar sign. Okay, so this is how you will be posting your question under the technical group. Okay, I will come back to the recording of today's session. मैं वो भी बताऊंगी आप सबको, पर इतना जल्दी नहीं बताना चाहती because मुझे पता है अगर जैसे ही मैं बता दूंगी recording, आप सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे and you will not be able to hear out what I am trying to explain everyone.
ठीक है, आई एम सो सॉरी सुधीर जी, एंड आई वांटेड यू टू स्टे विद मी फॉर another 10 minutes, please, huh? Okay. So now when you post any question in any of the doubt clearing question in the doubt solving question, जैसी उसकी रिप्लाई आती है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बटन में एक्टिव हो जाता है ऑन द ऐप कि आपके पास नोटिफिकेशन आया और आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो जब आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं, आपके पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, वहां पे भी आप देख सकते हैं क्या आंसर्स आया है। तो एक बार मैं टेक्निकल क्लब में जाती हूँ, ठीक है। ये देखिए 39 मिनट्स पहले विशाल शाह जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पर, उसका जवाब देखिए अमरीश जी ने दिया है यहाँ पर विद इन 35 मिनट्स के, आई थिंक कुछ 5-10 मिनट के अंदर दिया। हाउएवर द मार्केट वाज क्लोज but still he has given the reply here, but please do not expect a quick 5 minutes answer if the market is closed. However, he was available, that's why he gave you the answer during the live market. You will get the reply in 5 minutes time only. Okay, नाउ भाविक जी, कैन वी मूव अहेड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बाकी का टैट क्या है, कि अगर मैं फंडामेंटल क्लब में कुछ पूछता हूं तो मुझे जवाब कब मिलेगा। सो इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन इन द फंडामेंटल क्लब ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, you will get the reply within 24 to 48 hours because it will be related to some investment or stock or fundamentals. We will not be able to give you view in couple of hours only because it's a thing, it's a longer process. We have to understand what kind of question you're asking. If you're asking question under the commodity and currency or FNO, you will get the reply within 15 to 20 minutes during the live market. If you're asking, let's say Sudhir ji, if you're asking question under the mutual fund section, you get the reply within 24 to 48 hours. ठीक है, सो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अगर आप सबको समझ आ गई है कि ये डाउट सॉल्विंग को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, और तो प्लीज लिखेंगे y is a yes और n for no. फैंटास्टिक शाश्वत जी, राजेश जी, थैंक यू, संजय जी, ओके, विनीता जी, थैंक यू। ओके, नाउ विनीता जी, यू शुड ऑल्सो नो दैट कि ये जो डाउट सॉल्विंग है इसमें आपको रिप्लाई कौन देता है, ठीक है, यू शुड नो दैट, राइट। सो व्हेन यू गो टू द डिस्कवर, again I'm taking you to the discover section and you will see here the experts. Okay, एक्सपर्ट का मतलब हो रहा है कि इनके पास में ब्लू टिक है। ब्लू टिक का मतलब हो रहा है कि दे आर द पीपल, विनीता जी, दे आर वर्किंग फुल टाइम विद स्टॉकेज ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक मी। मैं जैसे फुल टाइम काम करती हूँ यहाँ पर, इसी तरीके से है ये लोग काम करते हैं। पर ये सभी कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए क्वालिफाइड एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब दे आर अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वो आरए क्वालिफाइड एनालिस्ट हैं, इसीलिए इनके पास में ब्लू टिक दिया गया है। And they are the person who are authorized to give you the answer if you have any under the doubt solving. Okay? उषा जी, अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, I'll definitely help you. Okay, great. I think more or less I have tried to make you all understand everything. Now coming to the recording of the sessions. Recording कैसे देखना है सुधीर जी? Now I am on it. Okay? Okay. चलिए. So if you wanted to check the recording, please everyone view on my screen. सर्च बटन में आपको जाके लिखना है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कुछ भी आप लिखेंगे, कपल ऑफ लेटर्स लिखेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग का टैब दिखेगा। क्लिक ऑन ऐड टू सर्च। उसके बाद आप लिखेंगे कस्टमर या फिर कस्टमर डिलाइट, या डिलाइट वर्ड आप भी लिखेंगे तो भी आएगा। स्टॉकेज का जो कस्टमर डिलाइट टीम है यानी कि मेरे डिपार्टमेंट का ये हैंडल आएगा। आपको ऐड टू सर्च करना है यानी कि एडवांस सर्च करना है एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको मंडे टू सैटरडे एवरी डे जो ये सेशंस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। यानी कि जो लास्ट सैटरडे है यानी कि आज का जो भी है पोस्ट वो कल यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहीं पे दिख जाएगी। और जैसे कि हमने लास्ट सैटरडे सेशन किया था तो उसी के ऊपर में देखिए हमने ये जब रिकॉर्डिंग अपलोड किया है तो यहाँ पर वो मिल गया है। So whenever if you wanted to refer the recording, you do not wanted to put this stockage, customer delight handle, recordings word all the time. It is very simple. Once you do, you click on the three dot and click on add bookmark. This will get added to your bookmark section here on the left side.
ठीक है। और एक सुधीर जी बहुत ही एकदम सरल बात बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, देख सकते हैं आप, वो है कि अगर आप if you are if you go to the Stockage YouTube channel, you will be able to view all the recordings of daily session. This is Stockage Smart. Apart from Friday, Friday का session हम YouTube channel पे upload नहीं करते हैं because it's post market analysis, right? Um, we do not have any session on Sunday. We have Monday to Saturday only. So let's say Pritesh ji, if he comes again on Monday to attend this session, he will be attending the same topic, same details, everything. The thing is that it will be live. Pritesh ji will be attending a live. ये recorded session नहीं चलता है, हम recorded नहीं करते, हम everyday ये session attend करवाते हैं. अगर मान लीजिए आप 20 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, 300 दिन के बाद, also you come and join the link, and let's say it's a Diwali day, then also you will see that ये session अपने time पे चल रहा है. रश्मि जी, it will be available at Stockage का YouTube channel पे, apart from Friday session. Friday is a post market analysis session. We do not upload the session on YouTube channel. Rest of the session gets uploaded at YouTube channel. Shyam ji, ask the market session also is because you are a club member. आप सबके लिए आज दी एक्सपर्ट का एक सेशन होता है, ठीक है, वो सेशन होता है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. टुडे आल्सो यू हैव अ सेशन, वेंसडे you will have a session, and Friday you will have session. So this will happen considering if the market is open and the session is happening, it will be done. Okay. Okay, so it is Monday, Wednesday, Friday, and this is only available to the club user. So club user, when you go to the customer delight team handle, right there you will see the recording of Ask the Expert also once it is uploaded. If not a club member, in that case, you will not get the Ask the Expert session, but you will get this session which you are attending right now, you can do. Sir, if you are a Stockage non-club member, you get a lot of feature related to the Stockage, which we're going to cover from tomorrow onwards. Today, we have covered the free version part and also what is there. Also, what is there under the Stockage social. We have shown that to here to all of you. Under the Stockage social, I guided that to here, so that will help. The timings for Stockage Smart, which you're attending right now, Pritesh ji, it is the same 6 to 7 p.m. but at times 10-15 minutes थोड़ा सा extend हो जाता है. Okay, now let me know that did you find this session effective? आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको जितना भी मैंने समझाया, अगर आपको लगता है ये effective है, so just write some words which I can consider it was helpful. Okay, so tomorrow what do we have? Tomorrow we're going to cover the fundamental feature, investment feature. We will explain you tomorrow, and it will be done by one of the by one of the blue tick expert. Her name is Shantana. She will be trying to cover tomorrow. Let's see. Okay, or any of the other blue tick expert will cover tomorrow. और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम आप सबको अच्छे से इस चीजों को समझा सकें. राजेश जी, लर्न सेक्शन देखिए, आप लर्न पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कोर्सेज और वेबिनार्स दिए गए हैं. अगर आप क्लब यूजर हैं तो आपको बहुत सारे वेबिनार्स और कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं. वो आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको वापस से दिखाऊंगी. ये 9 डॉट को आप क्लिक करेंगे और स्टॉकेज के वेबसाइट पे आप स्विच करेंगे. जैसे आप स्विच कर लिए, आप डैशबोर्ड पे जाइएगा और ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी द वेबिनार एंड कोर्सेज. सो यहाँ पे हमारी जो ई लर्न मार्केट्स है, विच इज द लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहां से हम करीबन 80% वेबिनार को यहाँ पर टैग कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द क्लब यूजर. If you're a club user, please, for God's sake, do not ever go to eLearn Markets and purchase any webinar. पहले आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कि वो आपके यहाँ पे टैग्ड है कि नहीं, बिकॉज 80% वेबिनार आपको कंप्लीटली फ्री मिलती है अगर आप क्लब यूजर है तो. So just do not worry, just go check here. If it is not tagged, in that case, you go to eLearn Markets and purchase it. Also related to the courses, there are 999 courses which are there under eLearn Markets.
out of which 80% to 85% courses are tagged here for you as a complimentary if you're a club user. Just book your seats from here, not from Elon Markets. Bharati ji, yes, if you have to install, you should install Stockage Social and Stockage app in your phone. सर, अगर जब मार्केट गिरती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होता है जो मुझे लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस कि हमें मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए और अपना लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो भी वेबिनार्स हो आप उसको अटेंड कीजिए। बहुत सारे वेबिनार्स पर टॉपिक होते हैं मोहम्मद जी, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। पर सिर्फ इतना चीज हमें याद रखना है कि गिरते हुए मार्केट को हमें पकड़ना नहीं है, चेज नहीं करना है, या फिर हमें उसके we shouldn't get to that net, as in हम उसमें फंस ना जाए उसके स्पाइडर नेट में, राइट? सो वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस ऑन दैट। ठीक है, ट्रेड्स तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। एट टाइम्स हम इन्वेस्टिंग आइडियाज एंड ट्रेडिंग आइडियाज में भी हम कवर करते हैं। वी टेल देम दैट प्लीज डू नॉट एंटर इनटू न्यू ट्रेड्स, हम वहां पे भी बताते हैं। Okay, so with this, I end the session. So towards the end, let me introduce myself. मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, and I am the Vice President for Customer Delight Team for Stockage and E-Learn Markets. और मैं हमेशा आप सबकी सर्विस में रहूंगी और मेरी डिपार्टमेंट रहेगी। मैंने थोड़ा सा अपना वेब कैम ऑफ रखा था आज बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसके वजह से आई डिड नॉट स्विच ऑन माय वेब कैम, सो सॉरी अबाउट इट। एंड आप सबका ब्लेसिंग चाहिए, एंड प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स एंड लव टू द एल्डर वन एंड द यंगर वन योर होम। अगेन आई रिपीट, प्रीतेश जी, संजय जी, विवेक जी एंड ऑल ऑफ यू हियर जो आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है, प्लीज रिमेंबर यू आर अ फैमिली टू मी, यू आर अ फैमिली टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो अगर आपकी कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज हो, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। कैसे रीच आउट करेंगे वो मैं चैट में फटाफट आप सबको नंबर दे देती हूँ। आई एम देयर ऑन द stockage.com, और मैं आप सबके साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहूंगी। जेनरिक कस्टमर सपोर्ट नंबर जो हमारा है वो भी शेयर करती हूँ, एंड ऑल्सो आई विल शेयर द स्टॉकेज club number, club support number. The beauty is this department is open from Monday to Sunday from 9:30 a.m. to 8 p.m. अगर आज का कुछ चीज मुझसे छूट गया है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मेरा इंटेंशन उसे छोड़ना नहीं था, स्किप करना नहीं था, बट स्टिल यू हैव दिस नंबर, यू कैन रीच आउट टू देम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम आपका कॉल कभी मिस कर जाते हैं, मे बी अगर हमारा कोई मीटिंग है या कुछ भी है, so just do not worry. We will definitely see your missed call and we will call you back for sure. All right. With this, I end the session here. Thanks a lot for joining today. Tomorrow, we will be covering a lot of feature, which is a part of Premium Pro and Club related to the investment part. और उसमें आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज डेफिनेटली देखिएगा, वो मेरा काफी फेवरेट फीचर है। अगर आप एनालिटिक्स में जाएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ये फीचर हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स अब कवर करेंगे। दिस इज वन ऑफ माय थिंग विच आई go through related to investment, as because this is amazing for me. For an office goer, I cannot trade every day, right? So I cannot get into a trading, right? So in that case, I definitely do my investment considering this ideas which is given here. This will be very helpful to all of you. Pritesh ji, Sam ji, please do attend tomorrow sessions too. All right. So with this, I end the session. Lot of love and regards to all of you, and thank you once again for trusting Stockage.